Hello students, welcome to the channel again. This is part 4 of the video of analysis BHU 2019 MA English entrance exam and we are starting this video with question number 91. तो आइए क्वेश्चन नंबर 91 की शुरुआत करते हैं. Who ultimately becomes the husband of Portia in Merchant of Venice? The correct answer is Bassanio. मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बहुत ही फेमस प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. पोर्शिया इसमें प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही रिच है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है. और पोर्शिया के फादर एक कंडीशन रखते हैं कि एक पर्टिकुलर कैस्केट चूज करना है अगर मेरी डॉटर से शादी करनी है तो. बेसोनियो विंस अ कॉन्टेस्ट डिवाइस बाय हर फादर एंड दे मैरी एंड पोर्शिया गिव्स हर हस्बैंड अ रिंग एंड ही प्रॉमिसेस टू वियर इट फॉर एवर. Next question, who wrote the meaning of meaning 1923? The correct answer is option number 3 again. The meaning of meaning, a study of influence of language upon thought and of the science of symbolism is a book by C.K. Ogden and I.A. Richards. Next question. How many maxims are listed by H.P. Grice in his cooperative principles? The correct answer is 4. In social science generally and in linguistics specifically, the cooperative principles describe how people achieve effective conversational communication in common social situation. पॉल ग्राइस ने 1975 में ये डिस्क्रिप्शन दिया था थ्रू 4 conversational maxims and these maxims were maxim of quality, maxim of quantity, maxim of relation or relevance and maxim of manner. Next question, the primary accent in the word possibility is on first syllable, second syllable, third syllable और fourth syllable. पहले हम इसके syllables जान लेते हैं. There are total 5 syllables, possibility. इनमें से bill is the answer. The primary accent in the word possibility is on bill. Next question, which of the following इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनल सेंटेंस? तो आप लोग नॉट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चंस को रीड करते हैं. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है. सबसे पहले समझते हैं कैनल सेंटेंस क्या होता है. कैनल सेंटेंस एक सिंपल डिक्लेरेटिव कंस्ट्रक्शन होती है विद ओनली वन वर्ब. जैसे कि इफ आई से शी एट फूड एंड ही प्लेड सॉकर, दिस इज अ कैनल सेंटेंस. सिंपल, वन सब्जेक्ट, वन वर्ब एंड दिस इज ऑलवेज सिंपल सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो नेगेटिव हियर बिकम्स द आंसर. Next question, the word fax is an example of which of the following? The correct answer is clipping. Clipped words are the words shortened by common use and they are a shortened abbreviation of a word which makes them easier to spell as well as write. जैसे कि आप example देखिए, हम ad बोलते हैं simple and the proper word is advertisement and we say gas and the proper word is gasoline. The same way we say fax and the proper word is facsimile. Next question, how many consonants are possible in an initial consonant cluster in English? The correct answer is option number 1, that is 2. Initial consonant clusters are the complex sounds. ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स साउंड्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं वर्ड के बिगिनिंग में इन इंग्लिश वर्ड्स एंड दे आर कॉल्ड क्लस्टर्स बिकॉज ईच ऑफ द साउंड इन अ क्लस्टर कैन बी हर्ड. जैसे कि आप वर्ड बोलते हैं प्रे, PREY और PRAY दोनों में ही क्लस्टर साउंड है. जब हम बोलते हैं तो प्र बोलते हैं, प्र. तो 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ पर आते हैं. सेम हैपन्स इन सम अदर एग्जाम्पल्स लाइक स्टेप. तो वी से स्टर इन द वेरी बिगिनिंग और हमें 2 साउंड्स यहाँ पर सुनाई देते हैं. आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लोज्ड क्लास? क्लोज्ड क्लास ऐसे वर्ड्स जिनको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि चेंज भी नहीं करते और उसमें कुछ ऐड भी नहीं करते. जैसे कि डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शन, इन सब में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं अपने आप से. नए वर्ड्स इनमें ऐड नहीं होते, लेकिन एडवर्ब्स की कैटेगरी में नए वर्ड्स ऐड हो सकते हैं. सो इन इंग्लिश ग्रामर, क्लोज्ड क्लास refers to the category of function words that is part of speech that do not readily accept new members, new words. The closed class in English include pronouns, determiners, conjunction, preposition, etc. But adverbs can change. The new verbs can easily be added to adverbs.
Next question, how many nasal phonemes are there in English language? The correct answer is option number 1, that is 3. How? Let us understand. There are 3 nasal sound. Nasal sound मतलब जिनका sound हमारी nose के through आता है. In American English pronunciation, the M sound, the N sound and NG sound. जैसे M हम बोलते हैं मी में तो हमारी nose से sound आता है. न हम बोलते हैं नो में तो भी हमारी nose से sound आता है. And sing, when we say sing, उसके last का N और G एक बार फिर से बोलकर देखिए, you will feel that the sound is coming out of your voice. So म, न and combination of NG is the nasal phonemes in English language. Option number 1, that is 3. Next question, the term synchronic and diachronic were coined by which of the following? The correct answer is option number 4, Ferdinand de Saussure. Synchrony and diachrony दो different forms हैं, दो different viewpoints हैं in linguistic analysis, and synchronic approach किसी word की history को consider नहीं करती. On the contrary, और diachronic approach considers the development and evolution of a language through history. The concept were theorized by Swiss linguist Ferdinand de Saussure, professor of general linguistics in Geneva. Next question, the compound word trustworthy we are talking at present. किस किस से compound होकर ये word बना है? Noun plus noun, noun plus adjective, adjective plus noun और noun plus verb. The correct answer is noun plus adjective. It is trust, which is a noun, and worthy, which is an adjective. So trustworthy is a combination of noun plus adjective. Next question, in which novel Thomas Hardy introduced Wessex for the first time? The correct answer is option number 1, Far from the Maddening Crowd. Wessex first appeared in his novel Far from the Maddening Crowd in chapter number 50 of the serialized version, and Hardy had by the time already published 3 novels based on the southern region of England without giving it the name Wessex. So Wessex name was first used in this particular novel. Next question is related to absurd plays. Which of the following is not an example of absurd play? So please not को ज़रा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप absurd play यहाँ पर देखें और किसी भी ऑप्शन को चूज कर दें जो आपको ज़्यादा suitable लग रही है. The correct answer is Justice. Out of these, Justice is not an example of absurd play. Justice 1910 का एक play है by British writer John Galsworthy, and it is part of a campaign to improve conditions in British prisons and judicial system. Even विंस्टन चर्चिल ने भी ये प्ले देखा था, इसकी एक अर्ली परफॉर्मेंस देखी थी. एंड जॉन गेल्सवर्थी इन हिज प्ले जस्टिस adopts a satirical kind of tone to criticize the unfair practices of the judicial system. Next question, the epilogue of Tennyson's In Memoriam is a correct answer, marriage song. तो marriage song इसका correct answer है. देखते हैं किस तरह से. In Memoriam AHH is a poem by British poet Alfred Lord Tennyson जो कि 1850 में publish की गई थी उनके द्वारा, and it is dedicated to poet's beloved Cambridge friend author Henry Hallam, who died suddenly of a cerebral hemorrhage at the tender age of 22. And the epilogue is an epithalamion or marriage song, you can say, written for Tennyson's sister Cecilia and her husband, University professor Edmund Lushington, on their wedding day in 1842. Next question. Of the following poets who was not a member of Pylon School? The correct answer is Wilfred Owen. Important figures in the second generation of modernism, poets such as W.H. Auden, Louis MacNeice, C.D. Lewis, Stephen Spender, and John Benjamin had an outstanding place in the 30s as Ezra Pound and T.S. Eliot had in 20s. Their poetry almost deliberately deals with the British landscape and cityscape of the 30s, which is why they are often referred to as Pylon poets, and Wilfred Owen is not included in this list. Next question. In which year the third edition of Lyrical Ballad was published? The correct answer is 1802. ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एडिशन 1798 में पब्लिश हुआ था, जिसके साथ ही रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
who describes his last touches by exhibiting a portrait of her to a friend in Browning's poem My Last Touches. शायद सभी ने ये पोएट्री ज़रूर पढ़ी होगी, बहुत ही खूबसूरत ड्रामेटिक मोनोलॉग है My Last Touches. The correct answer is option number 1. My Last Touches is a poem by Robert Browning. बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसको एंथोलॉजाइज और पब्लिश भी किया जाता है. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का. सबसे पहले ये अपीयर हुई थी 1842 में. माई लास्ट टचेस इज अ पोम रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड ओरिजिनली पब्लिश इन 1842. इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच द स्पीकर इज द ड्यूक ऑफ फेरेरा एड्रेसिंग अ साइलेंट लिसनर. Next question. Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? The correct answer is option number 2, Ruskin. Ruskin read Shakespeare throughout his life, and he began as a child by hearing the comedies and history plays by Shakespeare, and plenty of his female characters were anything but heroic, like Lady Macbeth, Gertrude, the Queen in Cymbeline, and many more characters. So इन्हीं characters की वजह से शायद ऐसा कहा जाता है कि Shakespeare has only heroines and no heroes. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये लाइंस कौन सी पोइट्री से ली गई हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, डॉवर बीच. डॉवर बीच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दीज लाइंस. दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम डॉवर बीच. डॉवर बीच जो कि एक लिरिक पोम है बाय द इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड, और सबसे पहले पब्लिश हुई थी ये 1867 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट लॉन्ग साइलेंस से है ये शशि देशपांडे की दैट लॉन्ग साइलेंस कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी. द करेक्ट आंसर इज 1988. The novel explores the realities behind the silence of the protagonist Jaya, who attempts to resolve her problems by a process of temporarily withdrawal or silence, and achieves it only after breaking that long silence. That is why the title is That Long Silence. Next question. The picturesque scenery of which river was crucial behind the composition of Tintern Abbey? The correct answer is option number 2, Y. Lines written a few miles above Tintern Abbey is a poem by William Wordsworth, and the title Lines written a few miles above Tintern Abbey on revisiting the bank of the Wye during a tour July 13, 1798 is often abbreviated simply to Tintern Abbey. So the correct answer is option number 2, River Wye. Next question. Make them laugh, make them cry, make them wait was a personal maxim of which novelist? किस novelist का मानना था ये? The correct answer is Charles Dickens. Make them laugh, make them cry, make them wait was Dickens' motto and his method which he applied in many of his writings. The technique used in the execution of this method bear careful scrutiny, for they were integral to the work of the master storyteller Charles Dickens. Next question. Next question is about this text. Which of the following book is written by Rabindranath Tagore, R.N. Tagore? The correct answer is option number 1, Rakht Karabi. Rakht Karabi is one of the more than 60 plays and dance dramas and dramatic sketches that were written by Tagore, and the play written in 1923. 1923 में ये प्ले लिखा गया था. It began during Tagore's stay in Shillong, Assam, and he was motivated by the image of red oleander plant crushed by the pieces of discarded iron that Tagore had come across while walking one day. And this particular play basically depicts the same thing. This play depicts how human greed denies the beauties and naturalness of life. Next question, an easy one. Who was the creator of Sherlock Holmes? And the correct answer is option number 4, Arthur Conan Doyle. Next question, which is related to Untouchable. हमसे पूछा गया बाघा के टाउन का नाम अनटचेबल में. द करेक्ट आंसर इज बुलाशा, ऑप्शन नंबर 4. अनटचेबल एक नॉवल है बाय मुल्कराज आनंद जो कि 1835 में पब्लिश हुआ था, और साथ ही साथ उनका फर्स्ट नॉवल भी था, और ऐसा नॉवल जिसने उन्हें एक राइटर के रूप में इस्टेब्लिश किया था. द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट्स एक्सपीरियंस एज एन आउटकास्ट, और उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पर यूज किया गया है. अनटचेबल इज अ डे इन द लाइफ ऑफ यंग इंडियन स्वीपर नेम्ड बाघा एंड द सन ऑफ लाखा, हेड ऑफ
all Bulla Shah's sweeper. तो Bulla Shah becomes the right answer. Next question. Nature is the incarnation of thought. The world is the mind precipitated. तो इन लाइन्स को हम कौन सी फिलोसफी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेचर इज द इंकारनेशन ऑफ थॉट एंड द वर्ल्ड इज द माइंड पर्सिपिटेटेड. ये लाइन्स कही गई हैं वॉल्डो के द्वारा, रेल्फ वेल्डो इमर्सन, जो कि ट्रांसेंडेंटलिज्म से एसोसिएटेड थे. ये एक अमेरिकन मोमेंट है जिसमें नेचर पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है एंड द पीपल, द फिलोसोफर्स रिलाई अपॉन इंट्यूशन रादर देन रीजन एंड लॉजिक. Next question. Which literary critic wrote The Great Tradition? The correct answer is F.R. Lewis. Option number 4. The Great Tradition is a book of literary criticism written by F.R. Lewis, published in 1948. 1948. Next question. Who had owned a flock of 40 sheep and goats in R.K. Narayan's A Horse and Two Goats? The correct answer is option number 1. Muni. Muni had owned a flock of 40 sheep and goats in his days of prosperity. A Horse and Two Goats and Other Stories is a collection of short stories by R.K. Narayan, published in 1971. 1970. आप लोग ईयर्स पर प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए. एंड द स्टोरी इज अबाउट मुनि हु इज अ वेरी पुअर मैन लिविंग इन मालगुडी एंड हु वंस वाज वेरी प्रॉस्परस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru's an autobiography is also known as which of the following? The correct answer is Towards Freedom. An autobiography, also known as Towards Freedom, is an autobiographical book written by Jawaharlal Nehru और 1936 में पब्लिश हुई थी ये. और इस बुक को उन्होंने अपने जेल स्टे के दौरान लिखा था, जो कि 1934 से लेकर जून 1934 से लेकर फरवरी 1935 तक का था. Next question and last question of this exam, question number 120. In the essay Tradition and Individual Talent, Eliot compares the mind of a poet to which of the following? The correct answer is a catalyst. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एक ऐसे है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया 1919 में, जो पब्लिश हुआ था. अब जानते हैं कैटलिस्ट क्या है. द कैटलिस्ट एक्चुअली फैसिलिटेट्स द केमिकल चेंज बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड. तो कैटलिस्ट एक तरीके का एलिमेंट होता है साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जो किसी केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है. Eliot compares the mind of the poet to catalyst, like they work to change the society, and Eliot has compared the poet's mind to a catalyst for this reason, and the reason that they work to bring change but they themselves remains unchanged. So we have reached to the end of this video. We have done the complete analysis of 120 questions that were asked in 2019 BHU MA English entrance exam. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams. You can contact us to join our online classes. The numbers are given in description.